woman, and the mother being the first guru in our lives. Today, we're introducing to a dance that was choreographed by Miss Aruna Gumadi, a first grade teacher at Devi Montessori for the past 16 years. Song and the mantra selection are by our respected Acharya Brahmdev. Please join us in welcoming them. It taught us to smile. It taught us to live. We never thank you enough for being, making us what we are. Ravi. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः।
सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जगमगाएंगे जगमगाएंगे जग में हम मिटाएंगे परिवार है सारी दुनिया शिक्षा ने हमें बताया जो भी है अपना ही पाया। हर बंधन छोड़ के खोलो खोलो ये अंधेरे हाँ बना दो सियाही और लिख दो तुम नई सुबह
यतो यत समीहसे ततो भयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः Girls have a forceful presence today. In homage to Swami Dayanand, who was the first in the modern era to emphasize on the education of girls and women, the mother being the first guru in our lives. Thank you. Tonight, as we celebrate the 200-year birth anniversary, the kickoff of Maharishi Swami Dayanand, we have some very special guests amongst us. These individuals lead a legacy of stalwarts of Arya Samaj, contributors who've made an impact, have tried to lead those footprints in seeing what contribution that they can leave behind. Most recently, the Sainik of Maharishi Swami Dayanand was the Bhamasha of the modern Arya Samaj, late Mahasaya Dharampalji, who we all know from MDH. Does anybody here not recognize him? And would you believe that his grandson is amongst us? Would like to take a moment to invite Sumukh Sharma, Adanya Devji, may I request you to please facilitate grandson of late Mahasaya Dharampalji, Sumukh Sharma. Sumukh resides in California, has recently moved there a few years ago, and we hope that the same zeal that Mahasaya had in giving his contributions to Arya Samaj and working for the cause of Arya Samaj, Sumukh would join us in this great mission. Also present is Mahasaya's daughter, Suman Raheja. And may I invite Adanya Sushma Mahajanji to please facilitate Sumanji. Sumanji has come just for this Sammelan, without us knowing. And equally, we'd like to recognize the dynamic woman, Mahasaya's daughter, who serves not only for the benefit of Arya Samaj, but she has an interest in children's education, the welfare of the society, Mrs.
Shushma Sharma ji. May I request Dr. Usha Sethi ji to please come up and facilitate Mahashi ji's daughter, Shushma ji. मैं आदरणीय सुषमा जी से कहूंगा कि कुछ 2 शब्द हमें आशीर्वाद। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा आयोजित विशेष आर्य महासम्मेलन ह्यूस्टन में पधारे सभी महानुभावों का मैं स्वागत करती हूँ और आयोजन समिति के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि इतने सुंदर आयोजन में मुझे आपने सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैंने पूरे आयोजन में भाग लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस किया, क्योंकि मुझे भी बचपन से आर्य समाजी संस्कार आदरणीय दादाजी से और पूज्य पिता महाशय धर्मपाल जी से मिले और मेरी शिक्षा दीक्षा भी आर्य समाजी विद्यालय में हुई। बचपन से दिल्ली में और भारत में आर्य समाज के आयोजनों में भाग लिया, किंतु इतनी दूर अमेरिका में भी आर्य समाज इतने बेहतर तरीके से और उत्साह से कार्य कर रहा है, यह पहली बार देखने का अवसर मिला। इससे मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। सबसे बड़ी प्रसन्नता बच्चों की पार्टिसिपेशन को लेकर है। उनके हवन को देखा, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा तो लगा कि यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बच्चे ही ऋषि दयानंद जी की सेइंग्स को दुनिया में ले जाएंगे और लोगों में जागृति लाएंगे। संस्कृत में आपने जो कार्यक्रम तैयार करवाए, माता पिता और ह्यूस्टन आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे वैदिक संस्कृति स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए हैं, उनको भी बहुत बधाई देती हूँ। यूएसए के अलग अलग स्थानों से आए लोगों से मिलना हुआ। बहुत से आर्य समाज के ग्रुप चल रहे हैं, पर अभी काफी जगहों पर आर्य समाज नहीं है, भवन नहीं है। उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भवन बनाने की तैयारी कीजिए, चाहे छोटा ही हो, पर इस दयानंद जयंती पर और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर भवन बनाने का मन में संकल्प लेकर जाएं। संकल्प किसी आयोजन की सफलता की पहली शर्त है और मुझे विश्वास है कि आप इस संकल्प को शीघ्र ही मूर्त रूप देने में सक्षम होंगे। अंत में मैं पुनः आर्य समाज ह्यूस्टन के सभी अधिकारियों का और सभा के सभी अधिकारी भुवनेश जी और मंत्री श्री विश्व जी को मैं अपना आशीर्वाद भी देना चाहूंगी, ताकि वो अपने हर प्रकार के प्रयास से यूएसए में आर्य समाज के कार्यों को और अधिक गति से बढ़ा सके। मेरे दोनों सुपुत्र सुमुख शर्मा और सुमन शर्मा कैलिफोर्निया में रहते हैं और मेरी यह इच्छा है कि वहां भी आप लोगों के सहयोग से एक आर्य समाज की स्थापना हो। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें कि ये कार्य शीघ्र संभव हो सके। मैं इस अवसर पर अपने पूज्य पिताजी महाशय धर्मपाल जी को अवश्य स्मरण करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें आर्य समाज के इस रास्ते पर चलना सिखाया। आज वो चाहे शरीर से हमारे साथ नहीं है, किंतु उनके संस्कार हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अधिक तैयारी के साथ न्यूयॉर्क में चल रहे आगे के कार्यक्रम की तैयारी के साथ सभी लोग मिलकर हम आगे कार्यक्रम को बनाएं और तैयारी करें, ताकि फिर एक बार न्यूयॉर्क में सब मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कुछ तो मुझे बोलना नहीं आता, ये मेरा थोड़ा प्रयास है जो मैं लिख कर लाई। जी धन्यवाद।
ये हमारा सौभाग्य ही है कि सुषमा जी यहाँ पर पधारी और उनके साथ साथ सुमुख और सुमंत उनके पुत्रों से परिचय हुआ। और मैंने कहीं पर ये बोला था कि आप साथ हैं तो हम जग जीत सकते हैं, तो एक आर्य समाज तो बना ही देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब दो जवान हो गए, माता का आशीर्वाद है और बाकी सब लोग सहयोग करेंगे तो आर्य समाज जल्दी वहां पर बनेगी, ऐसा हम आश्वासन आपको देते हैं। And by the way, Sushma Sharma ji and family have donated $5,001 to Aryapati Sabha America for this Sammelan. And that's the highest individual amount that we have received so far, someone coming from India. So we appreciate it very much. Thank you so much. सुमुख जी का हाँ नहीं, 5,000 बोला, $5,001, $5,100. Okay, धन्यवाद। 99 पड़ गया। Okay, who all have heard the name of Swami Shraddhanand ji? Show of hands. Okay, I want someone to take pictures from here. Okay, and you can recognize his picture somewhere there in the back, right? उनके बेटों के नाम कोई ले सकता है? हाँ जी, इंद्र विद्या वाचस्पति और हरिश्चंद्र जी, उनके बच्चों के नाम कोई ले सकता है? हाँ जी, तो हरिश्चंद्र जी जो उनके हाँ जी, हाँ जी, अब मैं दूसरी जनरेशन से परिचय कराऊंगा आपका, तो फिर आपको सरप्राइज दूंगा। तो उनके पुत्र थे हरिश्चंद्र जी, जैसे आपने बोला, हरिश्चंद्र जी के पुत्र श्री विद्याधर जी, वो उनका जो लास्ट नेम था विज था, विज, विद्याधर जी विज, उनके पुत्र, उनके पोते हो गए ना वो फिर स्वामी श्रद्धानंद जी के। विद्याधर जी के पुत्र हुए रविंद्र कुमार जी, तो वो प्रपौत्र हो गए, है ना, 4th जनरेशन हो गई ना। और उनके बेटे जो 5वीं जनरेशन है, 5वीं जनरेशन, वो यहां पर हमारे साथ बैठी हुई है। उनकी पत्नी भी यहां बैठी हुई है, उनकी पत्नी इस आर्य समाज से जुड़ी हुई है। जो उनके 5th जनरेशन के ग्रैंड चाइल्ड हैं, his wife is associated to this samaj, and that granddaughter, she is the great granddaughter of Mahatma Hansraj ji. So you have 2 legacies, 4th or 5th generation being present here amongst us. और उनके भी 2 बच्चियां यहाँ पर साथ में आई हुई हैं, देवयानी और दिया, देवयानी और दिया तो 6 जनरेशन स्वामी श्रद्धानंद की और महात्मा हंसराज की हमारे बीच में है। Isn't it a great day? Do you want to see their faces? मोहित जी, अंजलि जी, देवयानी, अंदिया जी सामने आइएगा, अपना इंट्रोडक्शन सबको अपनी शक्ल से दिखाइएगा। Give them a round of applause in appreciation of Swami Shraddhanand Saraswati and Mahatma Hansraj ji. We feel great to have you here, Mohit ji and Anjali ji, Devyani and Diya. We are so thrilled. Okay, we want to give a formal welcome to both of them. We are so thrilled, Mohit ji, and I knew that मैंने विनीता जी को बताया तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि how come she can meet a person from the family of Swami Shraddhanand ji. So I'll request Shri Vinay Arya ji and Dr. Rajendra Vidyalankar ji to please come and felicitate Mohit Vijji, the 5th generation person or great grandson of Swami Shraddhanand ji. Give them a round of applause as so Dr. Rajendra ji and we hosted a program about Swami Shraddhanand ji 3 years back. That's when we met Mohit Vijji for the first time. So that's why they are here. Then I'm requesting
सुषमा महाजन जी to please come, sorry, सुषमा महाजन जी और सुषमा शर्मा जी दोनों आइएगा. सुषमा शर्मा जी आप भी आइए, बेटियों को भी करना है प्लीज. सुषमा शर्मा जी आप आ जाइए प्लीज, और सुषमा महाजन जी आप भी आइए. तो भाभी जी अंजलि आर्य जी को और देवयानी एंड दिया, तीनों को आप लोग फेलिसिटेट करेंगे. मुझे आशा है एंड आई होप कि फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन जो है वो फॉर्मल संबंध में बन करके, और मोहित जी पूरा परिवार आर्य समाज के साथ जुड़ा रहेगा. ये लोग वहां पर समाज सेवा में अग्रसर हैं. स्वामी श्रद्धानंद के नाम पर इन्होंने भवन भी एक बनवाया हुआ है. इट्स ए प्लेजर टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर. गिव देम अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज. I'll now request Mohit ji to please address the audience for a couple of minutes. Mohit ji, please, most welcome. Thank you, Vishwaji. Thank you, Sanjay ji, Jayanti. I am not prepared for a speech or anything, but first of all, this is such a great honor. So very pleased to be here and very honored to be here. We have been coming here for a long time. Actually, my wife is from Houston, and interestingly, when we met this our second meeting, I would say a date. She asked me to come here, and I was at Arya Samaj almost 22 years ago. And in fact, I had at that time told her I said, why don't you Google and find out what the full name of Swami Shraddhanand ji is, and which was Munshi Ramvit. So as you see a connection, so I'll tell you the whole story. So this was 22 years ago, and today we are here again. And I'm from Louisiana, so not too far, but we came here for today. And Vishwaji found me in some way, and we had been talking for a couple of years now. And so not at this scale. So first of all, is congratulations to Sanjay ji, to Sushma ji, to have built such a magnificent opportunity for the next generation here in Houston, and not just build it and to keep it running. We've made a small attempt like this in Baton Rouge. So if any of you ever come there, we have a Swami Shraddhanand Hall there in Hindu Vedic Society. So we, kind of inherited I'll say inherited in the sense of the next generation. It's our responsibility to keep these values alive and keep moving it. So we're doing whatever we can do in Louisiana. So, but it's always nice to come to Houston at a bigger scale and associate with people who've been doing it for such a long time. And Anjali's been telling me that how long she's known and how much you've done for Arya Samaj here. So, yeah. So, but it's really, and I really want to thank all of you who are here, especially the next generation, because I think it's so important for us to continue those values, which our forefathers and your forefathers at some point decided to subscribe to and have continued those values. So if we don't do it, I was telling my daughter that, a lot of things that we know, we heard from our grandparents. And then in between, everybody gets busy and life has moved on, and those things you start losing them. Good thing is there's Google now, so you can look into and find out. And some time ago, I started finding all the books available on Arya Samaj and said, we need to find out more who we are, where we came from. And especially if you look at, the best part I find is that the Vedas have grown over years. So if you look at that, the knowledge that we're getting is alive. It's moved through generations. So there's so much richness in our culture in Arya Samaj. And especially with, now that we have a new opportunity in India, without being political, but, we are seeing a revival of things. And that is so exciting to see that, but the mantle is with us now, the next generation, to make sure that, and as the revival is happening, and we already hear how fast things are moving in India in the last few years, and I think it will only accelerate. So what we can bring from our culture, from our Vedas, I think it's paramount that we keep doing our job. So once again, thank you everyone for bringing us here and for the honor. Really appreciate it.
अब मोहित जी और अंजलि जी आर्य समाज से दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो उनको जोड़ के रखना अब हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? उनके साथ फोटो खिंचाइएगा, उनका नंबर लीजिएगा, दीजिएगा, एंड वी नीड टू मेक देम अ पार्ट ऑफ द नीड। घोंसले का जो डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया था कि वो हमारे परिवार का हिस्सा एक्टिवली हो जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना और ऐसी हमारी विश आप सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mohitji, for gracing this occasion and really bringing the energy. I just want to share a fun fact. You know, my last name is Khosla. For those who you didn't know, I think Mohitji did not know. My grandfather's ancestral town, village, district Jalandhar, was Talvan. And guess who also lived in Talvan? The birthplace was Swami Shraddhanand. So we share some legacy. And Swami Shraddhanand invited my father's Nanaji, Acharya Ramdev ji, to come help set up Gurukul Kangdi, and then later on Kanya Gurukul Dehradun, which was the first Gurukul, women's Gurukul in India at that time. So it's a very proud moment for us. So when I was listening to the Ashirvachan given by Adinaya Sushma ji, and she talked about building bhavans, it was really a nice segue. For years, we have been in discussions for the need of a nodal point of Arya Samaj in the United States, a center that would be a destination of sorts, not only an icon for our Vedic culture and heritage, but a retreat and a place of solace where Arya families would gather to rejuvenate, to learn, to reconnect with the roots of the Satya Sanatan Vedic Dharma. Thanks to the generous support of Dr. and Mrs. Aurora of Greater Atlanta Vedic Temple, this dream will become a reality very, very soon. During the Arya Mahasammelan in 2019, they very generously donated a beautiful piece of land in Lawrenceville, Georgia. While it was difficult to conceptualize what this place would look like, because during the pandemic, we couldn't even send a land surveyor out there. But tonight, we have a presentation of a vision which we hope resonates with you. It is truly a concept. It is a dream of all Aryas in North America. I'll ask the AV team to please play the Vedic Village video.
It is our hope that this vision is shared. At the very center of this project would be a center for meditation, center for yoga, a retreat where Aryas and anybody interested in Vedic philosophy could come spend a night, a weekend, a week-long camp. And adjacent to this beautiful main building would be approximately 75 senior focused independent living condominiums where couples in their third and fourth ashrams of their lives could live in a community based on Vedic values, use the facilities of Vedic village, have a natural surroundings. And we hope with the energy of the 200 years of Maharishi Dayanand, that next year we will start doing the groundbreaking. One of our senior board members who is guiding us through this process, because he comes from an engineering background, Shri Arun Kundraji, I'll ask him to come say 2 words. I have been discussing this project with Vishwaji and Bhuvneshi and then many others and Dr. Aurora's. I have visited the site at least 2 times, and I have taken the walks there. We walked in the woods, and it's a beautiful piece of property. It's about 30 acres of total and has a river flowing through it. And about 5.5 acres of that is usable, is a higher ground. The rest is near the river. But I think this vision is great. We discussed in a meeting what we need, and I think this is an ideal location. It is in the middle of the city, but still away from it, and gives a kind of ruler once it's developed. It is in Atlanta, about less than an hour from the airport. So I would say people who want to stay in condominiums, independent living housing there, their kith and kin, if they want to meet them, they can fly into Atlanta easy because it's one of the busiest airports and a lot of connections. I think we still have to do a lot of work. We still, it is a vision, and I think we need everybody's support to make it work. So thank you so much. Thank you, Adrian Kundaji, for helping us along through this process. And as he said, there's a lot of work to be done, but this work is only possible with your utmost support. I hope the vision is shared. And this is really only possible if you come follow this journey. So thank you. I'll invite Vishwaji. I said one line earlier and I'll repeat it. And probably I'll remind you and then you will repeat with me. So line क्या थी? आप साथ हैं तो हम जग जीत सकते हैं. That was the line, right? So I will say आप साथ हैं and you will repeat हम जग जीत सकते हैं. आप साथ हैं तो, आप साथ हैं तो, आप साथ हैं तो ये बिल्डिंग कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है. We have 400 people sitting here. Can we get enough confidence that we will have enough support in the months and years to come to at least kickstart the project? Can we have that support from all of you?
Yes, show of hands, whether it's possible or not to create such a property, right? It's possible. We are not asking all the money today. There is a vision, there is a dream, but to convert it to a reality, there has to be an effort. If we do nothing, nothing happens. Picture दिखाना आसान है, फिर भी उसमें समय और पैसे लगते हैं, but picture को reality में बदलना is going to be challenging. But I feel that we have come, we never imagined that someone will rise from a meeting like this and say, hey, 1.5 million of land, it is yours. I never imagined. Vinayji had made this appeal, and I never thought that in Atlanta, someone will rise and say that. So it suddenly happens. So we are hoping that few of you will rise someday, sometime to make it a reality. With that said, I want to recognize the donors that who have already donated at the Mahasammelan. In one of the meetings, and Devji asked us, what is your target? I said, even to run the operations, we need 115K. He said, how are you going to raise it? And I say कि कुछ हम देंगे, कुछ आप करा देना. तो कह रहे तुम कितना करोगे? कह रहे हमने कहा जी हम 75,000 तो कर लेंगे. तो कह रहे 75,000 करो फिर देखेंगे. So he was not confident that we can do 75,000, but I am happy that the number that I'm going to share, we have crossed $75,000. Give yourself a round of applause for doing that. और उसमें एक बात और बताता हूं, ह्यूस्टन वालों, ये बात बताता हूं कि वो 75,000 में से ह्यूस्टन का हिस्सा बहुत थोड़ा है और बहुत सारा आना बाकी है. Only 5 people from Houston has given so far, and I'm hoping that we will cross all the minimum expectations that we have, so that we can use the whatever extra donations that we get for this project, also for the preacher project that we are going to have. Without further ado, I'm going to read all the names to recognize the generous contributions. Yes, now do the next slide, please. And I'll read it really fast. Sushma ji and Dev Mahajan ji, Jyoti ji and Dr. Rajendra Gandhi ji, Dr. Sudhir Anand ji, Manju ji and Arun Kundra ji, Dr. Vijay and Om Arora ji, Dr. Sushma and Om Gandhi ji, Sati ji and Nadia Gurdeyal ji, Madhu ji and Hari Vashne ji, Bhuvnesh Khosla ji and family, Arya family, Anonymous, Dr. Bhushan Verma ji, Dr. Vijay Verma ji, Mrs. Rajneesh Gupta ji, Pandit Vedwat Itwaru ji and Mahavai Itwaru ji, Dr. Ramesh Amita Gupta ji, Dr. Kulbhushan Gulati ji, Dr. Bhupendra Gupta Basudha Gupta ji, Sanjay and Renu Jain ji, Ranbir Kumar ji, Anu and Bharat Malhotra ji. Let's go next. Dr. Usha Sethi ji, Mrs. Vinita ji and Sumit Kochar, Dr. Rajesh Agrawal, Dr. Rajesh Gupta, Manohar Chintala, Dr. Deenbandhu Savitri Chandora, Anonymous, Richa Singhal and family, Hemant and Taru Vashi ji, Ulkesh and Hina Desai ji, Kaushik Vashi ji, Anonymous, Prabha Puri ji, Kapil and Rita ji, Saroj Nayyar ji, Sanjay ji and Shailaja Nayyar ji, Dinesh ke Arya ji, Pooja ke Arya ji, Anita, Anika and Ambar ji, Akhil and Madhu Govil ji, Anjali and Sudhir Arya ji. Let's go next. Rajan and Preeti Rekhi ji, Archana Chandra and Ramesh Saxena ji, Sanjay and Anjum Gupta ji, Pankaj and Manjula Thapar ji, Raghuvir ji and Indra Singhal ji, Dr. V.D. Sharma ji, Asha Garg ji, Shashi and Shri Singh ji, Ranju and Samir Patel ji, Pandit Madan Prasad ji, Shreyans Saroha ji, Jogender Singh ji, Shri Satyapal ji, Arya and Aruna ji Arya, Vinay Chaudhary ji, Sushma Sharma ji, Vinay Sharma ji, Brijesh and Rajesh Goyal ji, Vidya Sagar Garg ji, Madhu and Jag Uppal ji, Neelu and Rajendra Gandhi ji. Let's go next. Santosh Kumar ji, Medhavini and Vikas Garg ji, Pooja Prakash ji, Promila Chopra ji, Aman and Bhavna Arora ji, Usha Malik ji, Saroj Mukhi ji, Om ji and Ranjana Gulati ji, Sushila and Sangeeta Singhal ji, Mukund and Jigna Panchal ji, Dr. Savita and Shashi Kutil ji, Surendra and Saroj Sharma ji, Jagdish and Suman Sood ji, Sai Kumar ji and Lata ji, Prabha ji and Devendra Garg, Shubh and Ramesh Mallan ji, Anonymous, Narendra and Usha Sood ji, Shori family, Shraddhabad Arya Samaj from India. Next, please go next. Manju Kalra ji, Veena Behel ji, Prabha Arya ji, Shamita and Rajesh Chuk ji, Pankaj Daima ji, Sadhna and Rajesh Chuk ji, Manoj Goyal ji, Leela and Om Verma ji, Arya Youth, Amber and Anika Arora, Usha and Subhash Sethi ji, Anonymous, Raj and Neelam Bhalla ji, Sangeeta and Digan Chauhan ji, Arun and Upma Balyan ji, Divya Rawal ji, Archana Chaudhary ji, Siddharth and Sneha Saigal ji, Vikrant and Shweta Ahuja ji, Suman Dutt and Rama Devi ji, Sudha Shroff ji. Go next, please. Ayushi and Manasvi Arya ji, Atul Verma ji, Anonymous, Andul Al ji, Acharya Amol ji, he gave $101 to support the project. Swati and Vagesh Shastri ji, Alka Chandra ji, Vishwas Narayan ji, Kamlesh Wahi ji, Arushi Garg ji, Dr. Vijay Lakshmi Arora ji, Sumedha and Siddharth Bansal ji, Dr. Rani Singla ji, Ujjwal ji, Vijay ji, Avinash Mehta ji and family, Deepak and Ranjana Bedi ji.
I'm hoping we have crossed 75,000, but we are not there yet. I'm hoping that after tonight's event is over, the minimum target for this definitely will be achieved, and we'll have much more than that, so that the projects that we are envisioning, they can be bring to fruition. I cannot say more. इस यज्ञ में जितनी आहुति हम डालेंगे, उतनी इससे अग्नि होगी, उतनी ही अग्नि ऊंची जाएगी, उतनी ही सुगंध फैलेगी। हम आपके बच्चे हैं, हम कार्य कर सकते हैं, पर कार्य करने का सपोर्ट आप सबको देना होगा। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम लोग we all do our best effort to support the Arya Samaj initiatives across North America. There is a pledge form outside on the registration table. You can contact me, Bhuvnesh, or any of the executive members to express your support, to let us know if you are interested to support the Vedic village concept in Atlanta as well, because that's a long-term project, and we will continue to need a lot of support from across the North America. With that said, I'll probably invite Sid and Vishwajit, right? Vipashit to next. Okay. Someone has asked for this book that is available online on the PDF. Please contact me for the information. Thank you. Okay, they can ask on the bookshop. One kind reminder for everyone to please turn their cell phones off. Next up, we have Arya, a thematic presentation in Bharatnatyam dance form, presented by students of Nupur Center of Performing Arts. Script, concept, and choreography is by Ms. Rupa Arankeji, Artistic Director of Nupur Center for Performing Arts. Ms. Rupa has a master's degree in classical dance form of Bharatnatyam from Mumbai University. She founded Nupur Center of Performing Arts in 1988 in Mumbai with a vision to expose the richness of Indian art and culture through the medium of dance. She continued her passion with the same zeal after migrating to the USA in 2002 and has been training students in this divine art, which helps them to understand the deep-rooted culture behind it. She has volunteered her expertise extensively to help the various Indian organizations in Houston during their festive seasons. Dance being a performing art, students are given plenty of opportunity to perform on stage, with the overall goal of supporting their growth and development, as well as helping them get towards their graduation in dance, known as the Arangetram. So with that, please join me in welcoming them and really supporting and sort of welcoming these young kids. Namaste. Am I audible? Okay. Thank you for this wonderful introduction of mine. And again, I just have to read what I've written. So, namaste and a very good evening to all. My name is Rupa Ranke, and thanks once again for introducing me. Me and my students are very excited to be a part of the Arya Mahasammelan Cultural Evening. My humble pranam and dhanyavad to Acharya Suryandan ji for recommending and most importantly, trusting in my abilities to put up a show for this evening. I extend my thanks and gratitude to Aarti Khanna ji and Sanjay Sood ji, who kept me updated and helped me with the other logistics in organizing this event, and also all the other volunteers of Arya Samaj. When Acharya ji requested me to put up a show for Arya Samaj, I knew I had certain challenges and limitations. Indian classical dance is deeply rooted in Hindu religion, and most of the dances revolve and take their content from the epics and Puranas. The bhakti form of worship and the ritualistic aspect of devotion to Puranic devatas are glorified and venerated through dance with the help of its various components like Angika Abhinaya or body language, poetry, and music. Attending the Vedic education classes offered here has helped me to deepen my understanding of our religion, and I started getting clarity of the philosophical and spiritual side of it. I chose to name this presentation Aryoday, which means the rise of the Aryans, first in the prehistoric times, and then again its revival by Maharshi Dayanand Saraswati, the founder of Arya Samaj,
as it was about to be extinct after a long and difficult passage of time, which we all know as the history of Bharatvarsha. I have tried to encapsulate this era in today's half-hour presentation. We begin today's performance with a traditional invocatory dance known as Pushpanjali, which means offering of flowers to welcome the presiding deities and the audience. This is presented by Priya Dargan, Aditi Bala, Arya Sahasrabuddhe, and Tanuja Sahasrabuddhe. Curtains be drawn. Thank you all. One request, can we have the audio a little up? Because on the stage, the dancers are not able to listen. Okay, so we continue. And the very first settlement of prehistoric mankind in the geographical region of current India and regions around were called the Aryans. The word Arya means noble. Their learnings through nature, meditation, observation, made them the source of knowledge for future generations till date. Many philosophical and spiritual concepts were derived from their collective experiences. They noticed that the forces of nature were helpful in sustaining their life. The sun that rose and shone throughout the day seemed like a miracle done by some unknown force, and it didn't take long for them to realize that their mere existence depended upon this bright, shining globe that appeared and disappeared every day. They expressed their gratitude to the magnificent luminous globe which provided life energy to the entire world. The Suryastakam is a salutation to this bestower of life. Presenting it are Arya Shankar, Ruchi Shri Garuda, Suchi Shri Garuda, and Arya Prabhu. Volume little more, please.
As the years went by, the inquisitive nature of human mind began to contemplate and question more about the functioning of the universe, its relation to them, and most of all, is there someone who created all this with a purpose? Just as the sun, they observed other forces and elements of nature like earth, water, fire, sky, etc., and their connection and contribution in their lives. Hence, it only made sense to them to make sure that they all were revered, venerated, and made peace with. They were indeed the very first environmentalists. Our next presentation, Bhumi Mangalam, is an admiration and hope for peace among all. This is presented by Ruchi Shri Garuda, Suchi Shri Garuda, Priya Dargan, Arya Sahasrabuddhe, Mrs. Tanuja Sahasrabuddhe, Mrs. Madhura Swadi, Mrs. Naina Prajapati, and Mrs. Afifa Hai.
As time elapsed, and along with it, some curious minds, whom we know as rishis, went on delving, exploring, inquiring about the secrets of nature, the creator, the real purpose of our existence, and so on. It were to these rishis to whom the knowledge was revealed, and then they transmitted them orally to others. Thus, we get the four Vedas, which form the base of our religious and philosophical teachings. After the Vedas, the Upanishads are the most important in Vedic literature. They are an assortment of texts that were recorded from the oral traditions. They take their basic topics from the Vedas and explain them in detail. In our next presentation, I have chosen the verse from the Mandukya Upanishad, the message of which is that the syllable Om is not just the name of God, but describes its connection and its relevance to the universe and the human soul, which is Jivatma. Just as the syllable Om has four parts or padas, so does the universe and the human soul. The third verse from Mandukya Upanishad describes the Jagarita Avastha or waking state, where the senses are fully awake and are connected to the outward material world and experience hearing, seeing, touching, smelling, etc. to absorb it all. This is going to be performed by Kumari Ruchi Garuda.
जागरितस्थानो वैश्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूल भुक्वैश्वानरः प्रथमः पादः The Aryans, not the Aryans not only advanced spiritually, but also in other spheres of life, which made them rich and prosperous. The glory of our land reached beyond the regions of the seas. These people invaded us to conquer, convert, loot, and destroy our land. This not just affected the socio-economic condition, but also affected the religious and spiritual side. Many other sub-religions were formed, and the Vedic devatas were represented in different forms in the Puranas, which is where the concept of idol worship took root. So from spiritual practice and self-realization, the focus shifted to rituals and traditional forms of worship. Different regions had their own selected choice of the form of the divine, which resulted in different sects and cults. That was the time when the grand temples, which still stand tall, were built. The sects were the reason for division among people, as one claimed superiority over the other. Religions of the invaders too were getting established, mostly by the force of the sword. Amongst all the chaos, then there arose some great thinkers and philosophers who, through their poetic skills and spiritual insights, strived to get the people back to their Vedic roots. This period, from 7th century to about 17th century, was known as the Bhakti movement. Great saint poets like Mirabai, Guru Nanak Dev Ji, Ramanuja, Tukaram, Kabir, Surdas, etc. were born in this era. Our next presentation is on a poem or doha by the mystical saint poet Kabir. According to him, the common ways of realizing God, like rituals, chanting, austerities, etc., are worthless, and one has to realize him within oneself. Moko Kaha Dhoondho Re Bandhe is being performed by Arya Shankar.
मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद 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 में, ना आकाश कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं तो रहूं शहर के बाहर, 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 मेरी पूरी मवास में मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। Nevertheless, as the land and its people were recovering, there was another invasion by the British, this time on the pretext of trade. They took full advantage of the weak societal conditions and further established their foreign policies by divide and rule. The British rule had a damaging effect on the social, economic, cultural, and political life of Indians, which gradually forced common masses and rulers to rise in revolt against it. Works done by socio-religious groups like Brahmo Samaj and Arya Samaj played a crucial role in creating awareness among Indians. Swami Dayanand Saraswati, founder of the Arya Samaj, that brought about changes in the religious perception of Indians. He voiced his opinions against idolatry and the pointless emphasis on empty ritualism. He was given the epithet of Maharshi and is considered as one of the makers of modern India.
Krivantu Vishwam Aryam is the motto of the Samaj, which means make this world noble. A Aryodaya once again. We conclude this evening's performance with a homage to Dayanandji by celebrating his vision of one world, one religion, and one God, whose name is Om. The bhajan Om Hai Param Pita Ka Naam will be performed by Priya Dargan, Aditi Bala, Arya Sahasrabuddhe, Arya Prabhu, and Ritu Prajapati. It will be followed by a Shanti Path. All participants of Nupur Center of Performing Arts will be performing this. Hope you all have liked and enjoyed today's presentation. And I once again, on behalf of all my students and their parents, thank Arya Samaj Houston for giving us this opportunity. Namaste. ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम में रहते स्वयं भगवान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम में रहते स्वयं भगवान। ओम को सुमरो आठों याम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम की ध्वनि है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन। ओम की ध्वनि है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन। ओम का अक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम। ओम का अक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम। इस पे निछावर शब्द तमाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम भज ओम भज ओम भज ओम, सब कोई बोलो भाई ओम ओम ओम। ओम भज ओम भज ओम भज ओम, सब कोई बोलो भाई ओम ओम ओम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम भज ओम भज ओम भज ओम, सब कोई बोलो भाई ओम ओम ओम। ओम भज ओम भज ओम भज ओम, सब कोई बोलो भाई ओम ओम ओम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। They have to go, they have to go. One more dance. Let's play the music. Music on, please.
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः साम शान्तिः एति ॐ शान्तिः 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 Can you believe Bharatnatyam can do Swami Dayanand Stuti? Thank you, Rupa ji. Thank you all the performers. We really appreciate your performance here. How appropriate could be. Thank you so much. So, in the lights of what Vishnujji's appeal was, I'm not a good appealer for donations, but Arya Samaj Houston has committed to raise minimum $25,000. And I'm so happy to say we have 3 commitments already. Bera and Anand Jain ji are going to contribute $2,000. Shekhar Agarwal ji is going to contribute $2,100. And his older brother Govind and Renu Agarwal ji has committed $5,000. So thank you very much. Keep those commitments coming. We will raise $25,000 for sure. Thank you. Now it's my pleasure to invite Adarniya Vinay Arya ji to talk about the next year's International Mahasammelan, which is going to be held in New York. Vinay Arya ji. धन्यवाद संजय जी, आप सभी को मेरी नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम के पश्चात एक छोटी सी अनाउंसमेंट। मैं समझता हूँ कि इस सम्मेलन की समाप्ति के लगभग हम निकट हैं, तो भुवनेश जी और विश्व जी ने जो शुरुआत की थी मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ आपके सभी के सामने। जैसा कि आप सभी को मालूम है, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का ये वर्ष चल रहा है। हम इसको 2 वर्षों तक लगातार आयोजित करेंगे। दुनिया भर के अंदर विश्व के सब जगहों पर, सब जगह पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय में आयोजन होंगे। मुख्य रूप से जो एक श्रृंखला है, मैं उसकी एक छोटी सी झलक केवल आपके सामने रखूँगा संक्षेप में। 12 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारम्भ किया था इन सभी आयोजनों का दिल्ली से, और इसके पश्चात में हर स्थान पर अलग अलग समय में आर्य समाज के द्वारा, हमारे स्कूल्स के द्वारा, हमारे गुरुकुल्स के द्वारा, अपनी सभाओं के द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें ये शुरुआत हुई अमेरिका में इन आयोजनों को आगे बढ़ाने की आपके ह्यूस्टन शहर से। और इनकी श्रृंखला 1 साल तक मुझे लगता है कि सभी आर्य समाज जितने भी हैं हमारे यूएस में, वो इसको अपने 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 स्थानों पर करेंगे। और 2024 में जुलाई में एक ग्रैंड इवेंट के रूप में न्यूयॉर्क के अंदर हम लोगों ने, जैसा कि आपने ही विचार किया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के रूप में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का बड़ा आयोजन अमेरिका में न्यूयॉर्क में मनाया जाए। तो मैं आपसे एक ये अपील कर सकता हूँ कि मैं लगभग 2007 से लगातार यहाँ से जुड़ा रहा हूँ अमेरिका के कार्यक्रमों से, और मैं ये अनुभव करता हूँ कि ये समय है आपको अपनी एक शक्ति को एक सम्मिलित रूप से, संगठित रूप से बहुत मजबूती से प्रस्तुत करने का। जब आर्य अपनी सभा का कभी निर्माण हुआ था, उसके पश्चात आज एक बड़ा समय हमारे पास में, तो 2024 का न्यूयॉर्क में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां इस प्रकार से करें कि अमेरिका में सबको ये कम से कम एहसास हो जाए कि महर्षि दयानंद द्वारा जलाई गई जो ज्योति थी
वो अमेरिका में एक बहुत ही उत्साह के साथ आज प्रज्वलित है और लगातार आगे प्रज्वलित रहने की पूरी तैयारी है। तो मुझे लगता है एक बार एक उत्साह के साथ उस ग्रैंड इवेंट का स्वागत करें आप अभी से, और तैयारी भी इस रूप में करें, क्योंकि अमेरिका इस समय एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां पर फिजी से आए हुए आर्य समाज के लोग, मॉरिशस से, सुरीनाम से, गयाना से, नेपाल से, भारत से, अलग अलग स्थानों से जो आर्य समाज की ज्योति जली थी, वहां से यहाँ पर आकर के उन्होंने उसको प्रज्वलित रखा है। तो हमारे लिए एक अवसर है कि उन सभी परिवारों को एक जोड़ करके, और जो अभी तक शायद हमसे ज्वाइन ना हो, उनको लेकर के हम बड़ा एक उत्साहवर्धक आयोजन न्यूयॉर्क में रखें, क्योंकि न्यूयॉर्क अपने आप में छोटा भारत है। कम से कम मैं एक आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात कह सकता हूँ। तो इसलिए यह निवेदन के साथ में कि सार्वदेशिक सभा भी इसको पूरी तौर पर इस आयोजन में सहभागी रहेगी, और हमने लगभग विचार किया कि 300 प्लस लोग जो हैं अमेरिका के बाहर से कम यहाँ पर उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है 300 की संख्या एक बड़ी संख्या है। तो मुझे लगता है ये 300 की संख्या जो है 10% है जी विशु जी, 300 की संख्या जो है वो 10% होनी चाहिए। ये आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। हमारे संजय जी बैठे, संजय जी काम, संजय जी 300 लोग होंगे अमेरिका के बाहर से, तो हमारा सोचना है कि 10% संख्या होनी चाहिए 300 जो है। अब वो हाँ 3000 टोटल 3000 की संख्या मिनिमम आप सोचिएगा, और ये होगी। हमारे माननीय देव जी इस समय मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनकी मुस्कुराहट हमारी जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए है। तो मैं नहीं तो संजय जी का मानना यह है कि मांगो वो जो मिल जाए। दूसरा मैं निवेदन कर दूं आपसे कि 2025 तक ये जो प्रोग्राम चलेंगे उसमें मैं मेन इवेंट्स आपको जानकारी देना चाहूँगा। आज के बाद में बड़ा इवेंट जो है टंकारा में है, जहाँ महर्षि दयानंद का जन्म हुआ था। 11-12 फरवरी टंकारा 2024 में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और उसके पश्चात में आर्य समाज के 150 ईयर्स, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। मुंबई में इसका इवेंट होगा अप्रैल 2024 में, लेकिन ये इवेंट स्थानीय होंगे, क्योंकि हमें अपने अपने स्थान पर भी इनका आयोजन करना है। और ये 2 साल का जो समापन है, जो एक मेगा इवेंट है, उसके लिए मैं आज आपको इनवाइट अभी से करने जा रहा हूँ। वह अक्टूबर 25 में, जिस इवेंट में आप पिछली बार हमारे साथ में थे दिल्ली के अंदर 2018 में 2018 में अक्टूबर एंड लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2025 में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें वर्ष का बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। मैं अभी से आपसे अनुरोध करूंगा, जो भी प्रोग्राम बनाएं आप 25 का, वो ऐसे ही बनाइएगा किसी भी रूप में कि वो आप अक्टूबर के एंड वीक में आप भारत में अवश्य ही रह सकें। मुझे लगता है 5 लाख लोगों की उपस्थिति के साथ में वो बहुत ही शानदार इवेंट होने जा रहा है। उसकी तैयारियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं, और दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसमें एक भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और वो वहाँ पर उस दिन उपस्थित ना हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। उसकी तैयारियाँ उसी के हिसाब से रहेंगी। तो ये एक छोटा सा एक मैंने आपके सामने एक कार्यक्रम का एक विचार सा रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में जो जिस उत्साह से शुरुआत हुई है इस आयोजन की 200वीं जयंती की, उसी उत्साह के साथ पूरे 2 वर्ष तक आप हमारे साथ रहेंगे इस इवेंट में। और अंत में मैं इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी, श्रीमान SK आर्य जी, जिनकी चर्चा माननीय भूषण जी ने भी की थी, जो प्रगति प्रोजेक्ट के भी हमारे लीड्स में हैं। तो मैं उनकी ओर से आप सभी का बहुत आभार भी करूंगा और आपको आमंत्रण भी उनकी ओर से दूंगा। उन्होंने ना आ पाने के लिए अपनी क्षमा भी कही है कि मैं नहीं आ पाया हूं, तो मैं उनकी ओर से क्षमा प्रार्थना करूंगा उनकी ओर से भी। और मैं चाहूँगा कि हम श्रीमान SK आर्य जी की ओर से आर्य समाज ह्यूस्टन को एक छोटा सा स्मृति भेंट करना चाहेंगे। मैं संजय जैन जी से चाहूँगा कि वो कृपया हमारे सामने आए, और आपके एग्जीक्यूटिव के जो कुछ लोग, माननीय देव जी से भी जरूर मैं अनुरोध करूँगा कि आए, और मैं हमारे राजेंद्र जी से अनुरोध करूँगा हम सभी की ओर से वे स्मृति को भेंट करें। आइए संजय जी, आइए। जो हमारा Hey, it's me, your skin. I crave being done with acne. देव जी से मेरा अनुरोध The रहेगा treating कि leaves me प्लीज red, हमारे sticky, निवेदन को स्वीकार irritated. करें। CeraVe Acne Cleanser. Foams with benzoyl peroxide to treat my acne, while 3 essential ceramides in CeraVe help restore my natural barrier.
With CeraVe, we can treat our acne, heal, and face the world. CeraVe Acne Foaming Cleanser from the #1 dermatologist recommended skincare brand. Buttery, rich, mouth-watering. There are a million ways to describe the taste of Pepperidge Farm thin and crispy cookies. But it's not proper to talk while you're eating. That is a damn fine cookie. Pepperidge Farm. और Have a little इसी taste. क्रम में एक आरपनी सभा अमेरिका को भी एक छोटी सी स्मृति बस इस अवसर पर देना चाहेंगे। आइए आइए जल्दी आइए, जल्दी हो गया, मेरा काम यहीं तक का था। आइए दाता जी आप आइए। और मैं नहीं वो नहीं, ये चलता है। इनको पता ही नहीं किसके लिए थे। नहीं मालूम है। आइए आइए आइए। अंत में मैं सार्वदेशिक आरपनी सभा की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं और धन्यवाद करता हूं पूरी टीम का, विशेषकर हमारे बीच में जो स्वामी श्रद्धानंद महाराज के जिस परिवार की एक श्रृंखला हमारे यहाँ पर उपस्थित है और महात्मा हंसराज जी के परिवार की श्रृंखला यहाँ पे उपस्थित है। मुझे लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसी प्रकार से अगर आगे तक बढ़ते चले जाएं तो महर्षि दयानंद की जलाई हुई लौ कभी भी किसी रूप में भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। कभी कभी हमारे दिल में जो निराशा आ जाती है वो आपको देख कर के आज पूरी तरह से मुझे लगता है दूर हुई है और आप और ज़्यादा मजबूत करेंगे आर्य समाज को, वैसे ही जैसे स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने अपने जीवन को तपा करके दूर किया था। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का आभार करता हूँ और एक निवेदन पूर्वक एक बात कह देता हूँ। आप आज के बाद में पंडित गुरुदत्त स्वामी श्रद्धानंद महात्मा हंसराज जी के जीवन के जो तप थे उनको लेकर के अपने मन में केवल इतना सा विचार करिएगा, स्वामी दयानंद को मिले केवल 19 साल जीवन में काम करने के लिए, केवल 19 साल, और एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को मिले केवल और केवल जीवन के 9 साल, केवल 9 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं काम कर सके। लेकिन इन दोनों है और स्वामी श्रद्धानंद को जीवन में मिले लगभग 30 साल काम करने के, लेकिन मेरे अभी जीवन में जिनके 9 साल बचे हैं, कम से कम वो ये विचार करेगा कि मैं उतना काम तो करूं जितना पंडित गुरुदत्त ने अपने 9 सालों में किया था, क्योंकि उनको ज्योति मिली थी दयानंद से और उसके पश्चात इन्होंने काम शुरू किया था। तो जिनके जीवन में 9 साल हैं कम से कम वो गुरुदत्त जितना सोचें, जिनके जीवन के 19 साल हैं कम से कम मन में विचार करें भाई स्वामी दयानंद को जो 19 साल मिले थे उन्होंने सारी दुनिया में प्रकाश फैलाया, मुझे यहाँ पर फैलाने का अवसर मिला है। मैं इस 19 सालों के बचे हुए जीवन को केवल और केवल आर्य समाज के लिए जीऊँ, ऋषि दयानंद की मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए जीऊँ, ये संकल्प लेकर के सम्मेलन से जाएंगे। मुझे विश्वास है कि 200वीं जयंती आने वाले समय में विश्व के लिए एक अमृत के रूप में हम सभी के साथ में आगे तक बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सभी का आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय जी। I'll just take 30 seconds that he invited us next year for the 2024 International Arya Mahasammelan. He has given us a target of an audience of minimum 3,000 people. Of those, 10% will be joining him from India. So thank you, Vinay ji. I'd like to invite Behan Sati ji, Pandit Bharat ji, Devi Lakhnath ji, and Ranbir ji, please. And Dr. Ramesh Gupta ji, I'm sorry. Over there, please. And Pandit Atwaru ji, of course. What you have representatives here are from the tri-state, New York, New Jersey, and Connecticut, United States. Sudhir Arya ji, please come up. And Anjali ji. So what we have is United Arya Samaj Federation of Tri-States along with Arya Pratni Sabha America. And I'll request the co-chairs of the 2023 Houston Arya Mahasammelan, Shri Sanjay
Sood ji and Rajesh Khosla ji to hand over the Om Dhwaj so this work may continue in July 2024. तो विनय जी, आपका निवेदन स्वीकार है। अब वो हैंड ओवर कर दिया न्यूयॉर्क को। मैंने 2 मिनट मांगे थे, 30 सेकंड तक उतर आए हैं। विनय जी ने कहा कि 3032 आर्य समाजिस हैं अमेरिका में, कम से कम 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हर समाज में। अगर सारी सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी आए तो 320, पत्नियों के साथ आए तकरीबन 750, 2 बच्चों के साथ आए 2100, 10% विनय जी लेके आ रहे हैं 2500, 500 लोग तो सारी दुनिया से आएंगे, 3000 पूरे हो गए। आप सबका साथ रहा, 5000 लेके आएंगे, साथ देंगे। हाथ सबके नीचे और साथ कैसे देंगे? 2-2 हाथ उठा के कहें न्यूयॉर्क आपके साथ हैं, न्यूयॉर्क आपके साथ हैं। महर्षि की 100वीं जयंती पर हम लोग नहीं थे, 300वीं जयंती पर हम नहीं होंगे, अरे 200वीं जयंती पर तो इकट्ठे हों, सब लोग मिलेंगे, हम बहुत ऊंचा झंडा लेके जाएंगे ओम का, मिलके करेंगे, फतेह करेंगे, आर्यों की फतेह होगी। हम सनातनी नहीं, आर्य सनातनी हैं, फतेह होगी हमारी। Thank you, Ranveer ji. Very well said. I'm going to invite Sanjay Sood ji and Rajesh Khosla ji on the stage for a minute. Although they've handed the flag to you, but their work is not committed. No, you go ahead. You go ahead. So, very special presentation for our leaders. Bhuvnesh Khosla ji and Vishnu ji have worked day and night until the last minute, until today. So, it is our desire on behalf of the Sammelan committee to honor Bhuvnesh Khosla ji and Smita ji. Please come forward. Aye. And then we're going to invite our General Secretary Vishnu ji and Swasti ji. Please. While the wives come, I want to thank Mohit ji for his donation of $5,000 for the Mahasammelan and Sabha. Thank you. Thank you, Sanjay Jain ji, Sanjay Sood ji, and Rajesh ji for that recognition. It's really, and I'm really thankful to you that you invited both Vishnu ji and my better half, because it's through their sacrifice we're able to make the time. I know we're running really late. One very last item, and then we'll invite the youth to come up and orderly bring everybody over to the dining hall. May I request Shri Vishnu ji, Shri Ranbir Kumar ji, Dr. Kulbhushan Gulati ji, Sanjay Sood ji, and Sunita Bagga ji to please come over here.
Sunita Bagaji, are you here? नहीं है, she's not. चलिए कोई बात नहीं. आज सुजी. अच्छा कोई बात. So it is customary that at the Arya Mahasammelan we appoint a new executive committee. I humbly accept the board's wishes based on the board of directors of Arya Pratni Sabha America's meeting yesterday. They have asked Shri Vishwat Arya ji to remain as General Secretary. They've asked Dr. Kulbhushan Gulati ji to continue his important role as the treasurer of Arya Pratni Sabha America. We've asked Sunita Bagga ji to continue as the joint secretary of Arya Pratni Sabha America. And we've asked Shri Ranbir Kumar ji to become Vice President of the East Coast of Arya Pratni Sabha America. And I was looking to really step down, but the board has asked me to serve for another 2 years. I humbly accept, and I hope we can deliver on the confidence with a shared vision with not only this executive team that is up here, but as we expand and grow, we find new individuals to take these leadership roles to carry the mission of Arya Samaj. I want to, and Sanjay Sood, of course, I apologize. He will now be the joint secretary as well. So, I want to thank the board of directors and the Arya Samaj leaders and volunteers for your confidence in extending this executive team forward. बहुत बहुत धन्यवाद. I'll ask you to remain seated. We'll ask the youth to come and send you over to the dining hall by row, please, is what I've been advised. So please, thank you, thank you, thank you. So while we get to the first 2 rows, I would like you to be escorted over to the dining halls, please. Please. Please follow Sanjay Jain ji. I'd like the AV team to maybe put some music on, if you would.
1 2 3 1 2. Mic test 1 2 3 1 2 3 1 2. Sa